Hey lovelies, welcome back to my channel. So this video is different from any other video because today I am reviewing my most favorite and top picks body mist from Bath and Body Works. Yes. So, oh my god, ouch. So I have these Bath and Body Works perfume with me. Oops, mist. I am totally obsessed with these fragrance and let's go. So first, from the OG first ever purchase which I have with me is In the Stars, and In the Stars is one of my favorite, and this is my fifth bottle for sure, and I started using it in the month year 2021 probably. One of my PG mate suggested me and she was using this one, and this fragrance was so good, so I had to ask her and she told me about this, and this was my first ever purchase from Bath and Body Works, and from that day I still have in 2025, so you can imagine the fragrance. So if I have to tell you about the notes, is starflower, sandalwood, musk, and then sugar, tanglo, I don't know if I'm pronouncing it right, white agarwood, radiant amber, yeah, whatever. So the smell is so delicate, so pretty, I don't know how to explain. I'm very bad at explaining the notes or the perfume or this fragrance, but this is like my one of the like top most favorite from Bath and Body Works. And to tell you, बहुत ही subtle yet elegant, very good for date nights, and बहुत ही, if you gonna use it, and you will definitely get a lot of compliments. So yes. एंड हाँ, मैं ये सब वीडियो बहुत टाइम बाद बना रही हूँ तो थोड़ा ब्लैबर करिए, आई डोंट नो बिकॉज आई हैव जस्ट कम फ्रॉम द ऑफिस एंड मैं बहुत टायर्ड भी हो गई हूँ. लुक एट माई फेस. एनीवे, सो आई जस्ट स्प्रे इट. Guys, if you want compliments and if you want to go to date nights or रात को if you're going out, you should definitely try In the Stars, my favorite. Fifth bottle, guys, और ये bottle कितने बड़े होते हैं you all know, but अभी if you guys can see कितना सा है your, तो go and grab In the Stars. Okay, so next we have warm vanilla sugar, and this bottle is from 2024 and I still have it. And if you guys can see, this is this much I have right now in this bottle. And if you are a vanilla girly like me, because the fragrance which I like is must be different from you all, but which I like is coffee vanilla, coffee caramelly vibe, and coffee sweet and very subtle, slow, काफ़ी गर्ली वाइब वाले परफ्यूम मुझे अच्छे लगते हैं, नॉट too much. So this is warm vanilla sugar, which I wanted to try, but this is my first bottle, and I have not purchased a new one because I like vanilla. But एक minute, just let me spray this. Okay, so काफ़ी टाइम बाद, क्योंकि गाइस अभी मेरे पास बहुत सारे न्यू है, तो मैं पुराने वाले को थोड़ा यू नो so let me go through the notes for you guys. So कहाँ है notes? Intoxicating vanilla, white orchid, sparkling sugar, fresh jasmine, creamy sandalwood, and sandalwood cozy, and okay, whatever. So इसका fragrance is काफ़ी vanilla vibe, but then vanilla को थोड़ा जलाया हो. Oh my god, I don't know. Nobody gonna watch my video because the way I'm telling is like you. But I can't help it. It's a little burnt vanilla and thoda sa vibrant, like daily use you can definitely gonna use. But you have to reapply this a bit
This doesn't stay for long compared to the last one that stays more than this one. So that's why that is my fifth purchase. This one is my the first one, and I don't know if I'm gonna buy this or not. Anyway, okay, guys. So next we have most talked about fragrance from Bath and Body Works, which is I think this year or last year it launched in India, and I think this year, I'm not so sure, correct me if I'm wrong, but this was suggested by one of my best friend, and she told me that this is so good, go buy yourself one. She bought two, and then this is again my first purchase from Bath and Body Works, and this is not used as much, it is more than half of the bottle, but there is no but about it, this is very good. So I'll just tell you the notes first, which is harvest blueberries, and then this again we have honey, then fluffy cake. So this is, the name is blueberry bundt cake, and this smells like a cheesecake, like a, when you go to a cheesecake shop or cake shop and you see blueberry cheesecake there, the same smell, the same fragrance you will find in this bottle. And okay, let me spray a bit. ओ आपको ही स्प्रे कर दिया. ओके, मेरी आदत है कि मैं बहुत पास लगे स्मेल करती हूँ, लेकिन हमको हमेशा दूर से स्मेल करना चाहिए. ओके, सो गाइज व्हेन आई ओपन द बॉटल, एंड ये मैंने ऑनलाइन परचेज किया था, एंड जब मैंने बॉटल को खोला, देन आई सॉ कि इसका मतलब, व्हेन आई सॉ नहीं, व्हेन आई स्मेल कि इसका फ्रेग्रेंस इतना ज़्यादा अच्छा है. बट देन आई रियलाइज कि इफ़ यू आर अ गर्ली लाइक मी जिसको बहुत ज़्यादा लगाना पसंद है, वंस यू स्प्रे लाइक, no, right now I have sprayed one spray, so it smells like heaven, like legit heaven. But अगर आप 5-6 स्प्रे लगाओगे all around your body, then you will feel कि इसमें alcohol level little bit higher side. Okay, so that is not an issue because मिस्ट में अल्कोहल लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है. सो या, बट अगर तुम्हें चीज़ केक जैसे स्मेल करना है तो प्लीज़ गो एंड बाय दिस, बिकॉज आई कैन स्टिल स्मेल द फ्रेग्रेंस लाइक. एनीवे, मैं अभी बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस लेने वाली हूँ, बट Bath and Body is magic. And this is also my top favorite right now because smells so heaven. पूरा चीज केक वाला वाइब है. So cute. Okay, so guys, this is my everyday go-to स्मेल. सो अभी ये मेरा recent purchase है, like last month, probably not even a month. ये अगस्त के लास्ट डे आई हैव bought it because मुझे ऑफर में मिल रहा था. एंड Bath and Body Bath and Body Works always, once in a month or like 2-3 months में ये हमेशा अपना ये ऑफर स्टार्ट करते हैं. एंड गर्ल्स, यू हैव टू ग्रैब दोज ऑफर्स फॉर श्योर. तो मैंने तभी ये लिया था, एंड इसका नाम है एट द बीच. एंड इसका नोट्स है, 1 सेकेंड, वेयर इज द नोट्स, या वाइट फैंगी पानी, व्हाट, सॉरी इफ I'm really sorry, blossom, toasted coconut, sea salt breeze, and sun kissed musk. Okay, okay. So, guys, what I want to tell you is this is like a beachy vibe, like full coconutty vibe. अगर आपको coconut का smell पसंद है, it is not overpowering कि the only coconut smell which is not little bit tacky, but this is a very pretty smell. If you like a little bit of vanilla and coconut and थोड़ा soft era, तो this fragrance is for you. And this is my most favorite, like अभी तक मैं जितने मैंने दिखाया, this is my favorite, top favorite. So this is there in my office bag to reapply, and I completely love it. And ये सबकी अपनी अपनी choice होती है. If you don't like coconut, then don't buy it, but you will not regret buying this one. So Bath and Body Works have two coconut, don't
two or three coconut. One is I think out of stock right now, but two we have right now. So don't get confused. The other one is overpowering the coconut, but this one is like a beachy coconutty and pretty sober vibe. So you should definitely gonna grab this. Should grab this. And my favorite, I'll just apply a bit to smell. This is like a मतलब मैं I cannot even express the feeling I have right now. बहुत ही प्यारा सटल सा ये स्मेल है. So go buy this. ये this is Shreya's recommendation. So next we have is their sweetest song, Fragrance, Mist from Body Work. And if you like soft, subtle smell, then this is for you. So I'll just smell a bit. I will smell this side. Okay. So this is like how do I even explain? If you see the bottle, आप एक princess हो और ये आपके castle का पूरा smell ऐसा है. मतलब I don't know if that even makes sense, but yes, very sweet, soft, pretty. I don't know how do I even explain. Notes, notes. Okay, notes है blush, raspberries, sugar crystals, whipped musk, and then we have यार मुझे दिख भी नहीं रहा है. Some music लिखा हुआ है, so that is anyway. So this is like आप castle में हो and the smell of the full castle and pretty सब fragrance. So if you want something like that, बहुत मीठा है तो बहुत लड़कियों को नहीं पसंद आ सकता है, but I like it. I like it. So I bought it. और हाँ, ये भी मैंने recent purchase में लिया है मेरा, तो अभी इतना ही यूज़ हुआ है. Gingham Glow, and I will be very honest with you guys that this is I don't know why they have not ingredients है but notes नहीं है. I don't know. So guys, ये okay. So मैं honest रिव्यू दूंगी, बिल्कुल honest रिव्यू दूंगी. गाइस डोंट बाय दिस. ठीक है, मुझे ये बिल्कुल नहीं पसंद. और दिस स्मेल्स लाइक दिस फ्लावर एंड दैट इज नॉट दैट गुड. मतलब मुझे तो ये रूम फ्रेशनर वाइब ज़्यादा और बॉडी मिस्ट कम लग रहा है. एंड मैं आई एम लिटरली टेलिंग यू गाइस दैट मैं जो भी रिव्यू बता रही हूँ वो मेरे खुद के एक्सपीरियंस से है. इट कैन बी डिफरेंट फॉर different person, but the smell, okay, the smell is good. Right now I'm feeling good because I have just sprayed it, but this smells like I don't know what to say. Like room freshener, flower वाला जो room freshener होता है, तो that I mean if you are a girl like me, like, so I don't think you will like it. So don't buy it. And I have just sprayed like 5 or 6 sprays till now because girlfriend डे कब था आपको पता ही है, तब से ये ऐसी है मेरे पास. किसी को चाहिए तो बता देना. और आई डोंट नो, मतलब मैं इसको लगा के बाहर जाके, मतलब ये चमेली फीलिंग आ रही है ऑनेस्टली, लाइक चमेली. आई डोंट नो if I'm sounding so rude, but that's true. So don't buy this one, Gingham Glow by Bath and Body Works. Last but not the least, I have Loyal for You. Okay, so Loyal for You में मैं आपको बताना चाहूँगी कि okay, first is notes. I don't know why they have not given the notes for these two bottles, so I have kept them for the last, and then I forgot. फिर से notes लिखने लग गई थी. And this is again a very sweet and loyal smell. अरे अरे 1 minute. एक तो मैंने इतना स्प्रे अभी स्मेल कर लिया है ना, तो राइट नाउ दैट्स व्हाई आई एम
I have to smell coffee to feel better. So anyway, साथ साथ फ्रेग्रेंस मेरे आसपास and आप लोग को शेयर कर रही हूँ. So this loyal for you is like ये ना किसी एक वेबसाइट का परफ्यूम, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट उसका सेम वाइब इसमें आया, तो आई लाइक दैट वन सो मच, एंड व्हेन आई smelled this one I liked so much, so that's why I have taken it. I swear I'm getting so many calls. जब भी वीडियो बनाती हूँ तभी ये सब क्यों, इतना टाइम बाद वीडियो बना रही हूँ. सो गाइस, हाँ, लॉयल फॉर यू इज वेरी वेरी सॉफ्ट, गर्ली एंड वेरी, मतलब ये आप बहुत मॉर्निंग प्रिटी एकदम, व्हेन यू कम आउट ऑफ यू नो योर शावर, एंड देन वो बॉडी लोशन एंड बॉडी शावर का जो स्मेल आता है, मतलब अपना अपना जो भी है, ये मुझे वैसा वाइब दे रहा था, एंड दिस वाइब इज सो गुड, लाइक मुझे बहुत प्यारा लगा. तो दैट्स वाई लॉयल फॉर यू. सो यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस वन ऑल्सो. सो नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी कि श्रेया तुम्हारा फेवरेट कौन सा है एंड तुम कौन सा बाथीन बॉडी वर्क्स हमें सजेस्ट करोगे out of these seven perfume. No, it's not perfume. Out of this, out of this seven body mist which I have right now. Okay, let me take a thumbnail for me. Oh, मेरा mic. चल thumbnail मैं बाद में ले लूँगी. So I will suggest you guys फर्स्ट में इन द स्टार्स. गाइस, दिस इज ओजी एंड इसका स्मेल कभी भी बदला नहीं है. आई डोंट नो, मतलब मैंने इतनी बार परचेज कर लिया है. आई लाइक इट. हाँ, पहले मुझे ऐसा फील हो रहा था कि बाथ एंड बॉडी वर्क्स के जो मिस्ट है वो बहुत ज़्यादा रहते थे. अभी यू हैव टू रीअप्लाई, बट दिस इज नॉट फ्रेग्रेंस, दिस इज नॉट परफ्यूम्स, these all are mist, so you have to reapply. And body mist है तो body parts में you have to apply. And हाँ, इसका एक best thing है, if you apply moisturizer first and then you use all this, तो आपको ज़्यादा स्टे करेगा. तो you have to apply moisturizer first and then you have to use your mist. तो उसमें ज़्यादा इफेक्ट. और अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप हर एक फ्रेग्रेंस का बॉडी लोशन में ले लो, तो यू गonna स्मेल सो क्रेजी. सो दिस इज माय फर्स्ट फेवरेट, एंड देन सेकंड फेवरेट इज माय कोकोनट. मुझे पता नहीं, ये मुझे कोकोनट का स्मेल इतना पसंद नहीं है गाइस. आई एम नॉट अ कोकोनट लवर, बट जब मैंने ये स्मेल किया तो मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा, एंड मतलब वाओ फील हुआ. अब तुम लोगों का डिफरेंट लग सकता है, बट दिस इज माय सेकंड फेवरेट. And then this is my third favorite is blueberry cheesecake. Cheesecake तो नाम नहीं है, इसका नाम है blueberry bundt cake, but this makes you smell like a cheesecake. तो मतलब इसको लगाने के बाद सब आपको खा जाना चाहिए, not in a bad way. तो I hope you like this video, guys, and don't forget to like, share and subscribe to my channel. And हाँ, like तो तुम करते नहीं हो तो छोड़ो. Bye bye.